Good morning, children. We will move to the next topic of fundamental duties of chapter number 9. Again, that topic is given on page number 68 and 69. Now, what are fundamental duties? Like, our country has given us some fundamental rights. Rights matlab hak hai hamare. Now, what are fundamental duties and what is the difference? Fundamental duties are that we have to perform on our own towards our country. हमको कंट्री की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये सोच के कि yes we are citizens of our country and we have to perform these duties on our own. हमको कुछ ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ने बताई हैं कि ये सब तुम्हारे हक है. हक मतलब जो हमको नहीं मिलेंगे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. Isn't it that are rights? ड्यूटीज़ है जो गवर्नमेंट ने हमको बताए हैं दैट वी हैव टू परफॉर्म ऑन आवर ओन टूवर्ड्स आवर कंट्री. लाइक एज अ चाइल्ड यू परफॉर्म सम ड्यूटीज टूवर्ड्स योर मदर एंड फादर और टूवर्ड्स योर एल्डर्स, तो वो तुम्हारी ड्यूटीज़ बनती हैं. हम बोलते हैं ना बेटा अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया करो. तो उसी तरह एज अ सिटीजन वी हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर कंट्री ऑल्सो. ओके, नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज आर द वंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज मॉरल ऑब्लिगेशंस the citizens are expected to perform. हमारी कंट्री एक्सपेक्ट कर रही है हमसे कि we as a citizen will perform these duties. Okay, on our own, willingly हमको ये duties perform करनी है. Article 51A under Part 4A of the Constitution of India speaks of the fundamental duties. Okay, under this Article 51A में Part 4 में ये duties बताई गई हैं. It was through the 42nd Amendment that these duties were introduced in the Constitution in the year 1976. Okay, जब amendment हुआ था 42nd Amendment in the year 1976, ये सब पूरी duties उसमें लिखी गई थी Constitution में. Now there are nearly 11 fundamental duties that we have to perform. Now the first one is to respect the national flag and the national anthem. Isn't it? As you know कि whenever we हमारा जब भी फ्लैग लहराता है तो we have to salute our national flag, or whenever this we hear our national anthem or we sing our national anthem we have to stand in a straight position, isn't it? So that is our duty, that is our respect shown towards our national flag and national anthem. Then to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. Now in history you have learned about everything, isn't it? How our leaders have given their lives to give us freedom, isn't it? तो जो भी उनके विचार हैं, जो भी उनकी आइडियाज़ हैं, वो हमको समझना है और उनको फॉलो करना है. देयर आइडल्स, उन्होंने जो भी रास्ता हमको दिखाया है दैट वी हैव टू फॉलो, दैट इज़ आवर ड्यूटी. ओके, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. कहीं पे भी never we have to lower or degrade India in any respect. हमको अपने इंडिया का सोवेनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, तीनों बनाए रखना है. सोवेनिटी मतलब इंडिया का नाम, सुप्रीमेसी ऊपर ही रखना है हरदम. We have to see that India is always united. We never break the unity of India. And integrity, भाईचारे में रहना है या भाईचारे हमको दिखाना है. Citizens should be ready to defend and render national services towards India. जब भी ज़रूरत हो, इंडिया अगर हमको बुलाती है, हमारी गवर्नमेंट हमको बुलाती है, we should be ready to give our services. Like during this pandemic you have seen कि कितने सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया, ऑन ड्यूटी बुलाया गया, सोल्जर्स को, देन वी कैन से पुलिस वालों को, कितनों को बुलाया गया ऑन ड्यूटी. उनको छुट्टियाँ भी नहीं दी गई all these months. So this is the time we have to show that yes we are dutiful, or we show or we give our services towards the nation. हमको as a citizen बोला गया कि be in our homes या अंदर ही रहो, ऐसे ऐसे सब guidelines दिया गया कि ये करो ये ना करो. So as a citizen we have to follow these guidelines. ऐसा नहीं कि हम तोड़कर guidelines तोड़कर या करके अपनी मर्जी से कुछ भी करें जिससे दूसरों को नुकसान हो. नो, वी हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज एट सच टाइम्स. देन टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया ऑन रिलीजियस एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. हमको भाईचारा बना के रखना है, द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल.
among all the religions and sections, all the diversities को हटाना है, remove all this and renounce practice of derogatory to the dignity of women. कहीं पे भी we have never to show or degrade women. Women को हरदम respect देना है. Either if she is a small girl to a big woman to an elderly woman, always show respect towards women. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारा जो culture है, tradition है, that we are following from thousands and thousands of years, we have to value it. हमको उसका महत्व पता होना चाहिए हमारे culture का. And to preserve this rich heritage. हमको ये बचाए रखना है और आगे भी बढ़ाना है हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को. ऐसा नहीं है कि हमको दूसरों का कल्चर अपनाकर उसको फॉलो करना है. नो, हाँ, सम गुड पॉइंट्स वी कैन अडॉप्ट एंड फॉलो. दूसरों का कल्चर फॉलो कर सकते हैं, बट हमारा कल्चर ही इतना अच्छा है, इतना वास्ट है. वी शुड फॉलो आवर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस. The natural environment including the forest, lakes, rivers and wildlife are expected to be preserved by the citizens. Government expects that we preserve this natural environment. हम forest को, lakes को कुछ harm ना पहुँचाएं, animals को कुछ harm ना पहुँचाएं, rivers को गंदा ना करें. All this is our duty to preserve all these natural environment. Whenever you go and visit the environmental places, कोई भी ऐसी places घूमने जाते हो, तो do not destroy it. Do not do any harm to such places, isn't it? या pollution create ना करो उधर. That is our duty, foremost duty as a citizen. Then to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Wherever necessary, wherever you have questions in your mind, ask it. Try to solve all the queries, isn't it? And try to adopt a scientific temper. What does it mean by scientific temper? मतलब अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए. Wherever necessary, think it in a scientific way. Like बहुत बार दादी माएँ हमको बोलती थी कि बिल्ली रास्ता काट के गई तो अब हमको उस रास्ते से नहीं जाना है. तो try to find out why it is being said so. Whether it is really उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको करना चाहिए या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है. तो साइंटिफिकली हमको वो सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसा है, करना है कि नहीं करना है. Okay, then humanism and the spirit of inquiry. We have to show humanity towards each and everybody. Spirit of inquiry, मैंने बताया, ask questions, isn't it? Try to ask questions to yourselves or try to solve your inquiries. आजकल तो तुम्हारे ज़माने में तो you have got the net easily available, Google है, so try to search the things on the Google and reform and try to change yourself in a better way. And try to think it in a scientific way. Okay, जो भी चीज़ें हैं सही तरीके से सोचना सीखो. To safeguard public property and to avoid violence. There is so much public property around. कौन सी public properties हैं? Like you have got the roads or the street lights or the gardens are there or the public toilets are there, or whether we are going to the railway stations or trains are there. All these are considered as public property. We have to safeguard all these things. हमको उनको destroy नहीं करना है या उनको गंदा नहीं करना है. And to avoid violence, we don't have to involve ourselves in any type of violence. Take for example in a school also, in a classroom also, don't create violence. किसी भी दूसरे बच्चे के साथ मारामारी नहीं करनी है या उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है. सेम वे एज अ सिटीजन, हम कहीं पे जाते हैं, अगर हमको किसी के ऊपर गुस्सा भी आता है, अवॉइड दैट. ट्राई टू सॉल्व द मैटर्स इन अ पीसफुल वे. People are expected for the excellence of all the individuals and collective activities to help in the development of the country. Okay, the government expect कि हम जो भी काम करें to our best, अच्छा काम करें, इतना अच्छा दें कि हमारी कंट्री उससे प्रोग्रेस हो सके, हमारी कंट्री डेवलप हो सके. Means whatever government is expecting कि whatever people do, they do it at their best, they do it in an excellent way, so that other individuals as well as the government or the country is being developed through that. To provide opportunities for education to child between the age of 6 to 14 years. ये मैंने पहले भी बताया था कि government is giving free education, compulsory education for the children from the age of 6 to 14 years. Free and compulsory education
गवर्नमेंट ने कर दिया है, सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री इज एजुकेटेड. ओके, नाउ 6th January is celebrated as Fundamental Duties Day. कि हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इम्पोर्टेंस देने के लिए या लोगों को समझाने के लिए 6th January is celebrated as Fundamental Duties Day. Okay, of all these duties, some duties are backed by law also. कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनके पीछे लॉ रखा गया है. अगर हम ये ड्यूटीज़ नहीं करते हैं या इसका वायलेट करते हैं, अगर हम ये ड्यूटी को तोड़ते हैं, तो वी कैन ऑल्सो बी punished. But normally duties are said as what? That we have to perform on our own. Okay, and then as a citizen you should understand it. Elders की duty बनती है, teachers की duty बनती है to inform children, to explain to the children about all these duties right from the tender age. Okay, like I am teaching you right from the small age also. Teachers should teach कि ये बेटा हमारी duty है, हमको ऐसा करना है towards the other individuals, towards our country. Okay, we have to, again as a citizen, we also have to see that some social evils are being practiced in our country. That also we have to avoid it. We have to stop all such social customs like untouchability है, child labor है, woman exploitation, dowry, female ferticide, ill customs, superstitions है. All these slowly and gradually we have to see that we have to stop all this. That is our duty, to stop all these evil customs from our society. Clear? Now these are the duties, again I am saying, we have to perform on our own. हमको खुद as a citizen perform करना है. Okay, so read the topic from the textbook. You have to write down this answer. This answer too comes for 3 marks. Normally it comes for 3 marks answer. Okay, go through it on your textbook on page 68 and 69. Thank you children. Have a nice day.